Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about the moving iron instruments. As we know that we have studied in the earlier class about the PMMC instruments, permanent magnet moving coil instruments. Moving iron instruments are used for both AC and DC application, while the PMMC instruments are used only for the DC application, so they are called the non-directional instruments. Working principle depend upon the movement of the iron attracted by the magnetic field towards it and repulsion between them. Magnetic field is produced by the current in the coil when we current flow in the coil, then the magnetic field is generated. This instrument can be used to make the ammeter, voltmeter and wattmeter. So basically there are the two type of the moving iron instruments, attraction type and the repulsion type. Now here we will see the attraction type instruments. So it is the basic principle of the attraction type of moving iron instrument. As shown in this figure, they contain the moving iron piece of iron that is movable and a pointer is attached with it. And there is a coil is present. Current is flow in the coil. Current coil के अंदर flow होता है. Then there is a air damping is provided to reduce the friction of the pointer, and pointer move on the scale. So that is the basic construction of the moving iron type instruments. It consists a moving system which has soft iron. The current is passed through a coil placed near it. यहाँ पर जो आयरन प्रेजेंट होता है और इसके पास में ही हमारे पास सॉफ्ट आयरन की कोर प्रेजेंट होती है. व्हेन वी फ्लो द करंट इन दिस कॉइल में फ्लो करते हैं तो जो मैग्नेटाइज्ड कॉइल हमारी हो जाती है, एंड दैट इज कॉइल इज मैग्नेटाइज्ड, एंड आफ्टर दैट द इट अट्रैक्ट द आयरन पीस. ये आयरन पीस को अट्रैक्ट करती है. इससे जो आयरन से पॉइंटर जो अटैच होता है दैट मूव ऑन द स्केल. इट कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड कॉइल वाउंडेड बाय ए कॉपर वायर. जो कॉइल है वो कॉपर की बनी होती है, वायर की. सॉफ्ट आयरन इज फ्री टू मूव ऑन द स्पिंडल एंड ए पॉइंटर इज ऑल्सो अटैच टू द स्पिंडल. So that is the basic construction of the such type of instrument. Now we will see the attraction type instruments working. The working of the attraction type iron meter is when the current flow through the coil. Now basically the these instruments work on the principle that the current flow in the coil, due to which the pointer will move. When the current in the coil direction will change, जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो what will happen, the moving iron will get magnetized and it also change its direction. Hence, these instruments can be used both for AC and DC current. The friction damping is provided by the air chamber. यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम damping है वो इस इंस्ट्रूमेंट को प्रोवाइड करते हैं. And what is the purpose of the damping? That can affect the deflection of the pointer and the reading can be changed. मैग्नेट है वो अफेक्ट कर सकता है. सो कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग है वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है. और मैग जो हमारे यहाँ पर डैम्पिंग है उससे हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस होता है. नाउ वी हैव सीन द अट्रैक्शन टाइप. नाउ वी विल सी द रिपल्सन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. In the repulsion type of the instruments,
बेसिक कंस्ट्रक्शन इज shown ऑफ द रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया है। रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में देर आर द टू आयरन, हमने यहाँ पर मेंशन किया है डबल आयरन, जैसा कि हमारा अट्रैक्शन टाइप में वन आयरन था, यहाँ पर टू आयरन होते हैं। वैन शेप के आयरन यहाँ पर होते हैं। वन आयरन तो ये फिक्स है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक आयरन यहाँ पर हमने, ये फिक्स आयरन है। एंड अनोदर इज द मूवेबल आयरन वैन, दूसरा हमारा मूवेबल आयरन वैन होता है ये। नाउ द फिक्स्ड सिलेंड्रिकल कॉइल इज अवेलेबल, यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड सिलेंड्रिकल कॉइल है वो अवेलेबल होती है। एंड ए शाफ्ट इज अटैच्ड विद दिस मूवेबल आयरन, से शाफ्ट को अटैच कर देते हैं। नाउ ए हेयर स्प्रिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू generate the controlling torque, and now the pointer which is attached with the moving iron will move on a scale, इस scale पर move करता है। तो basically it is the basic principle of the repulsion type of instrument. Now the repulsion type instrument working: moving iron and fixed iron magnetized with the same polarity, जो मूविंग आयरन है और फिक्स्ड आयरन दोनों सेम पोलरिटी से मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ड्यू टू विच द टू आयरन रिपेल ईच अदर, इससे ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल की वजह से ही द कॉइल विल मूव, अगर ये आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे तो कॉइल है वो मूव नहीं होगी। नाउ because of their repulsive force the coil start moving away from the fixed iron. Controlling torque is developed by the spring made of phosphorus bronze which is connected to the shaft. Air chamber is also provided for friction damping, and the deflection torques make the pointer to move away from the zero position. In moving iron instrument, basically the scale is non-uniform and theta will be proportional to I square. तो बेसिक यहाँ पर जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। नाउ टॉर्क वेट रेशो इज आल्सो केप्ट द गुड। देन व्हाट इज द टॉर्क वेट रेशो? Torque is a force that makes an object move and weight is a force applied on the object by the gravity. If the pointer in the meter has less weight, अगर हमारे pointer का weight कम है, it will have a high torque weight ratio. Even for a small deflection in the meter, the pointer will start moving and it show the measured value. So that should be good होना चाहिए हमारा जो torque weight का ratio है। Now there are the some advantages and disadvantages of the moving iron instruments. This type of instruments are simple and cheap in construction compared to the PMMC instruments. Also, it is non-directional because they can work both for AC DC के लिए work कर सकते हैं। Because of the current carrying part is stationary and has a lighter moving part, the torque weight ratio is high in such type of instrument. Due to the high torque weight ratio, the frictional error is very less in such a type of instrument. So these are the some advantages of the moving iron instruments. Now we see the some disadvantages of the moving iron instruments. The accuracy is less because of the instrument is non-directional. इस वजह से हमारी इस मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी जो एक्यूरेसी है दैट इज द लेस। इट कैन नॉट बी कैलिब्रेटेड विद ए हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन फॉर डीसी ऑन अकाउंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ हिस्टेरेसिस एंड देयर इज ए हाई पावर कंजम्पशन। तो इस तरह से वी हैव सीन दैट what are the advantages and disadvantages of the moving iron instruments. So we can conclude that there are the
we have studied about the PMMC instruments and moving iron instruments. PMMC instruments only work for the DC, and these instruments can be work for both the DC and AC. यहाँ पर हमारा इनमें लीनियर स्केल होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में, यहाँ पर हमारा लिटिल बिट नॉन लीनियर स्केल होता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में जो डिफ्लेक्शन है पॉइंटर का दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई हम कंसीडर करते हैं, बट इन द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में जो डिफ्लेक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच।